Okay, fine. Hello, everybody. So today, the topic of today is houses in astrology. So this is my first video where I'll be sharing certain basic elements about astrology कि वो कैसे function करती है, ठीक है? If you are keen into studying astrology, I'll try to make it as simple as possible for each one of you. So today, the basic thing that we'll try to understand is what is astrology, firstly, एंड सेकेंडली व्हाट ऑल इज देयर इनसाइड द एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द हाउसेज इन एस्ट्रोलॉजी। Fine. So, if you really want to understand what astrology is, so astrology is the ancient study of how positions and movements of celestial bodies like sun, moon, planets, and stars are believed to influence human life, personality, relationships, and events on Earth. ठीक है? So, मतलब if you believe in astrology, it is said that आपके जितने भी planets हैं उनका आपके ऊपर influence होता है, which is why they say that उनकी वजह से आपके लाइफ में सर्टेन इवेंट्स हैपन होते हैं। ठीक है, सो द वर्ड एस्ट्रो का एस्ट्रोलॉजी कम्स फ्रॉम एस्ट्रो मीन्स स्टार्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, सो लिटरली इट्स द स्टडी ऑफ स्टार्स। वाई फाइन। So astrology believes that the universe works in a pattern. So there is a pattern of universe. Basically, when you are born, the planetary positions at that exact time वो एक स्नैपशॉट की तरह leave an energetic imprint on you. ठीक है, तो आप जिस टाइम पे पैदा होते हो उसी मोमेंट पे जो हाउसेस जो आसमान में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आपका बर्थ चार्ट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इम्प्रिंट शोज योर नेचर, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, योर कर्मास, योर लाइफ पाथ। ठीक है, सो एज स्टेटेड सो बिलो, मीनिंग जो ऊपर प्लैनेट्स में होता है उसी का रिफ्लेक्शन हमारी ह्यूमन लाइफ में होता है, एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी। फाइन। सो बेसिकली जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज द वैदिक एस्ट्रोलॉजी विच इज द इंडियन एस्ट्रोलॉजी और द ज्योतिष। ठीक है, इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। हमारी एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन मून साइंस, फॉरेन एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन सन साइंस। ठीक है, वी यूज दशास जिससे हमें प्लानिटरी टाइमिंग्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, आर एस्ट्रोलॉजी और द वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिकली फोकसेस ऑन कर्मा, धर्मा एंड मोक्षस। ठीक है, अब इफ़ यू डिवाइड एस्ट्रोलॉजी इनटू वेरी बेसिक्स, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बर्थ चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 जोडियक साइंस होते हैं एंड 27 नक्षत्रास होते हैं। एंड इन 27 नक्षत्रास के भी लॉर्ड्स होते हैं जो कि वही प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, सो टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट द 12 हाउसेस एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, फाइन। सो आई हैव ट्राइड टू क्रिएट अ चार्ट फॉर यू। सो ये ऐसा दिखता है, आपका नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है ये। ठीक है, साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट अलग स्टाइल का दिखता है, दिस वन इज अ नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट। ठीक है, सो इफ़ यू लुक एट इट, दिस इज द फर्स्ट वन, आपकी बॉडी फिजिक को रिप्रेजेंट करता है। देन देर इज अ सेकेंड हाउस, देन देर इज अ थर्ड हाउस, एंड देन फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12। ठीक है, सो इस तरीके से हाउसेस रोटेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एंड हम इन हाउसेस को तोड़ तोड़ के अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। फाइन। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्स्ट हाउस, अब फर्स्ट हाउस है वो आपके असेंडेंट कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज लग्ना एंड इट इज द हाउस ऑफ सेल्फ। Okay, so the first house represents the self, the physical body, personality, identity, and overall life direction of a native. ठीक है, it is the most important house in astrology because it defines the native's individuality, health, vitality, एंड अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। ठीक है, कोई भी इंसान अपनी लाइफ को कैसे अप्रोच करता है वो उसके फर्स्ट हाउस से आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। दिस हाउस रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड डिटरमाइंस हाउ द नेटिव एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड। फाइन। एंड ये आपकी फिजिकल बॉडी एंड अपेयरेंस को भी दिखाता है। ठीक है, सो द फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स फिजिकल अपेयरेंस, योर हाइट, योर वेट, योर बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें बैठे हुए प्लैनेट से आप गेस कर सकते हो कि इंसान का वेट, मतलब इंसान पतला हो सकता है या वो मोटा हो सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ जुपिटर इज इन अ फर्स्ट हाउस, इंसान थोड़ा सा हैवी बॉडी हो सकता है। वाई? बिकॉज जुपिटर इज अ हैवी प्लान। ठीक है, इट गवर्न्स योर कॉम्प्लेक्शन, फेशियल फीचर्स, अट्रैक्टिवनेस,
इट इंडिकेट्स योर स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी एंड ओवरऑल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपका हेड, ब्रेन, स्कैल्प एंड फेशियल आइडेंटिटी भी फर्स्ट हाउस से डिटरमाइन होती है। इट रिप्रेजेंट्स इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस टू डिसीजेस एज वेल, ठीक है ना। अगर हम पर्सनैलिटी एंड नेचर में जाएं, तो द फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स द पर्सनैलिटी, टेपरामेंट एंड कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हाउसेस से ही हमें अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सामने वाले का टेम्परामेंट कैसा है। अगर कोई लाइक हॉट प्लैनेट अगर उसको देख रहा है तो भी हम इस बात को लगा सकते हैं अंदाजे में कि द पर्सन वुड हैव बीन इज अ बिट लाइक गुस्से वाला इंसान, फाइन। सो इट गवर्न सेल्फ कॉन्फिडेंस, courage and self esteem. It indicates self awareness and individuality. It represents your behavior, your attitude, and outwork towards life. It governs the mental strength and the emotional stability as well. ठीक है। So the life direction and overall success के context में the first house represents the overall life path। आपका destiny का direction कैसे होगा, आपकी personal success और achievements को दिखाता है। It also indicates your ability to initiate the actions. It represents leadership qualities and independence. It governs recognition, fame, and personal influence. ठीक है। हेल्थ एंड वाइटैलिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो द फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स योर जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। इट गवर्न्स वाइटैलिटी, energy levels, stamina, and it also indicates your resistance to illness and disease recovery ability. फाइन। सो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट हाउस तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। द पर्सन इज स्ट्रॉन्ग by health and vitality, has high confidence and leadership ability, strong personality and dependence, success and recognition in house। वीक और एफिलिक्टेड अगर आपका फर्स्ट हाउस है या फिर तो उसमें आपकी हेल्थ पुअर हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, यू माइट हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू एंड fearfulness can also be there. So identity confusion and instability भी weak first house दे सकता है। and also struggles in life direction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सो ये फर्स्ट हाउस के बारे में था। अगर किसी का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, सो वी हैव सर्टेन हाउसेस जो कि हम बैड हाउसेस मानते हैं, बेसिकली 6, 8 एंड 12, ठीक है। तो इफ योर फर्स्ट हाउस गोज इनटू 6, 8 और 12, इट्स जनरली नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड, फाइन। so why? Because sixth house is 6, 8 and 12 are the दुष्टाना houses in astrology। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस अगर इन हाउसेस में चला जाता है तो थोड़ा सा वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। इट कैन इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। बाकी ओवरऑल चार्ट से समझ में आएगा, बट हाँ, दिस इज देयर, fine। So now, if we look at the second house, now the second house is the Dhan Bhav or the Kutum or the family. So it represents your wealth, accumulated money, speech, food habits, and family. It governs stability and material security in life as well, ठीक है। So ये आपकी accumulated wealth और savings को depict करता है। It governs a bank balance and financial reserves. It indicates financial security and stability. It represents your valuables such as gold, jewelry, and assets. It governs the wealth accumulated over time as well, ठीक है। It also governs, second house represents your speech and communication style. It governs your voice quality and tone. It indicates the truthfulness or dishonesty in your speech, and it also represents your ability to influence others through speech, fine। अगर हम फैमिली में देखें तो सेकंड हाउस इज द फैमिली ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप पैदा हुए होते हो, दैट इज बेसिकली द सेकंड हाउस। इट गवर्न्स द फैमिली अपब्रिंगिंग, environment and upbringing as well। It indicates family wealth and support। It represents family traditions and values, ठीक है। फूडिंग और ईटिंग हैबिट्स में द सेकेंड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर फूड हैबिट्स एंड डाइट, ठीक है। इट गवर्न्स योर ईटिंग प्रेफरेंसेज, योर न्यूट्रिशन। इट इंडिकेट्स योर कंजम्पशन हैबिट्स एज वेल। एंड अगर हम फिजिकल बॉडी पार्ट्स में देखें तो इट गवर्न्स योर फेस, माउथ, टंग, teeth and nose, and it also represents your right eye and facial expressions as well। सो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाउस, आपको वेल्थ अक्यूमुलेट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल हैव अ स्वीट स्पीच, इन्फ्लुएंशियल स्पीच, ठीक है। आपका फैमिली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा एंड यू विल ऑल्सो हैव अ प्रॉस्परस लाइफ। बट अगर आपका सेकेंड हाउस वीक हो जाता है बाय एनी रीजन, सो यू विल हैव फाइनेंशियल लॉसेज, instability, harsh or problematic speech or family conflicts or financial security throughout your life, ठीक है। Now,
we have after that we have third house. Now what is third house? So third house is the house of your courage, सहज भाव, ठीक है. The third the third house represents your courage, effort, communication, and self initiative, ठीक है. It governs your physical strength and ability to take action as well. Courage and initiative. The third house represents courage and bravery. It governs your willpower, your determination. It also indicates your risk taking abilities. It represents confidence and facing the challenges. ठीक है. Communication skills में the third house represents your writing and speaking ability. It governs communication skills and media involvement as well. So यहाँ पे अगर किसी का राहु बैठा होता है फॉर एग्जाम्पल, सो उसको सोशल मीडिया से काफ़ी अच्छा वो गेन कर सकता है, ठीक है. सो इट इज़ वन ऑफ द गुड एस्पेक्ट्स एंड इट इंडिकेट्स टैलेंट इन आर्ट्स, म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस एज वेल. Fine. It also represents your siblings. Fine. The third house represents your younger siblings. It governs your relationship with them. It indicates support or conflict from siblings as well. And it also represents short travels and journeys. ठीक है. It governs the movement and transportation. With respect to body parts, ये आपके shoulders, hands और nervous coordination को impact को govern करता है. ठीक है. So if you have a strong third house, that means you have courage, bravery, strong communication skills. Success comes through self effort, ठीक है. Entrepreneurial ability है आपके अंदर. And if that same house is weak, then you may fear or you may have lack of courage, poor communication ability, or maybe lack of initiative can be there. Now, the fourth house. The fourth house is the basically the house of mother. ठीक है. It represents your mental, emotional happiness, mother, home and domestic comfort. ये एक काफ़ी सेंसिटिव हाउस होता है, ठीक है. द फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स द इमोशनल स्टेबिलिटी. इट गवर्न्स योर इनर हैप्पीनेस एंड पीस. इट इंडिकेट्स योर साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी. प्रॉपर्टी एंड एसेट्स में भी इट गवर्न्स योर लैंड एंड प्रॉपर्टी, ठीक है. इट गवर्न्स रियल एस्टेट ओनरशिप. इट इंडिकेट्स ओनरशिप ऑफ व्हीकल्स. Mother and family के respect में the fourth house represents your mother. It governs your relationship with mother and it also indicates maternal support and care. Okay. Uh, the fourth house also represents your basic education, ठीक है. It governs schooling and academic foundation and everything. Physical body parts में it governs your heart, your chest and your lungs. So if you have a strong fourth house, it will give you good amount of properties, ठीक है. लैंड ओनरशिप देगा. इमोशनली आप स्टेबल होगे, आपको डोमेस्टिक हैप्पीनेस होगी घर के अंदर. एंड इफ दैट सेम हाउस गोज वीक, ठीक है, तो इमोशनल डिस्ट्रेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, lack of peace, all of this can be seen from the bad fourth house. Fine. Now, then you have a fifth house, which is the house of intelligence. Now, the fifth house represents your intelligence, creativity, children, and past life karna. This is also पूर्व पुण्य भाव. फाइन. सो अगर हम इंटेलिजेंस एंड विजडम के एस्पेक्ट में देखिए तो द फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी. सो अगर राहु किसी के फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है तो द पर्सन इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, said to be extremely intelligent. It governs analytical thinking. It indicates learning ability. And with respect to child and progeny, the fifth house represents children. ठीक है. It governs fertility, childbirth. It indicates relationship with children. And creativity and talent में it governs your creativity, imagination and it governs your artistic talent as well, ठीक है. So fifth house is one of the त्रिकोणा house which is one of the very important houses. आपके past life के जितने भी deeds हैं सब इसी में stored हैं. Fine. With respect to romance and love, this house represents your romantic relationships. It governs love affairs. Physical body parts में it governs your stomach and liver. So if you have a bad fifth house, then आपको stomach में constant problem रहने की हो सकती है, ठीक है. Strong fifth house gives intelligence and creativity, healthy children and academic success, whereas a weak or an afflicted house, fifth, will give you a poor judgment and will give you problems related to your children as well. Fine. Now, the sixth house. This is the first Dushtana house that we have. So, कोई भी planet यहाँ पे कोई भी अच्छा planet, बेसिकली कोई भी planet नहीं, कोई भी अच्छा planet यहाँ पे थोड़ा सा problematic फील करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ मून इज देयर, प्रॉब्लम हो जाएगी उसको. इफ जुपिटर इज देयर,
not good. But if Rahu is there or if Mars is there, these planets can be a little better over here. Okay, so the sixth house represents enemies, diseases, deaths, competition, and service. It governs your struggles, obstacles, and the native's ability to overcome the challenges. ठीक है, तो ये दी हाउस ऑफ कंपटीशन है। आपके हाउस ऑफ डेट्स होते हैं, जितने भी आपके कर्जे होते हैं वो इस हाउस से देखे जाते हैं। जितने भी आपको डिसीजेस होती है वो इस हाउस से देखी जाती है। दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर एम्प्लॉयमेंट, डिसिप्लिन एंड द लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो जितने भी लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो आपको इस हाउस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी अच्छे बहुत सारे ऐसे लॉयर्स के चार्ट होते हैं जहाँ पे सिक्स्थ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, एंड देन दे आर वेरी गुड लॉयर्स एज वेल। फाइन। सो एनिमीज एंड कॉम्पिटिशन, द सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर एनिमीज, राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स. It governs conflicts, opposition, and resistance. It indicates your ability to defeat the enemies. It represents your competitive spirit and fighting ability. It also governs your legal disputes and court cases. अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो इट गवर्न्स योर डिसीजेज एंड इलनेस. इट गवर्न्स फिजिकल सफरिंग एंड हेल्थ डिसऑर्डर्स एज वेल. इट इंडिकेट्स recovery powers and resistance to diseases, and it represents chronic diseases and health vulnerabilities as well. Fine. Debts and financial obligations. The sixth house represents your debts and loans. It governs financial liabilities and repayment ability. It indicates borrowing and lending situations. It also represents the financial burdens that you guys, that one goes through. Fine. Service and job employment के aspect से the sixth house represents employment and service. आपकी जो डेली एम्प्लॉयमेंट है, डेली वर्क है, वो भी यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स योर रिलेशनशिप विद योर को वर्कर्स एंड subordinates एज वेल. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन एंड वर्क एथिक्स. फाइन. फिजिकल बॉडी पार्ट्स में इट रिप्रेजेंट्स योर इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लोअर एब्डोमेन. If you have a strong sixth house, though, your enemies will not be able to defeat you. You'll have strong resistance to diseases. You'll have success in competition, and you'll have strong work discipline. Fine. If it is weak, it will give you health problems. Okay, it will defeat you from enemies. You'll get into financial debts, and there will be a lot of workplace conflicts. Fine. So इस हाउस, ये पहला हमारा दुष्टाना हाउस है। ठीक है, now the seventh house. Now the seventh house is also the partnership house and the house of marriage. So the seventh house represents marriage, spouse, partnership, and public relationship. It governs your marital happiness, business partnerships, and interaction with others. Now suppose अगर आपका seventh house का lord sixth house में चला जाएगा, तो वो आपका also the sixth house is your house of enemies. ठीक है, तो if someone seventh house lord goes into the sixth house, उस इंसान को अपना स्पाउस या पार्टनरशिप में इश्यूज हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, उसको सामने वाला इंसान हमेशा अपना दुश्मन ही लग सकता है, ऐसा उसके माइंड में थॉट हो सकता है। या फिर अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में चला जाए तो भी ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, with respect to marriage and spouse, the seventh house represents your spouse and married life. It governs the quality of marriage. It indicates your spouse's nature and personality as well. It represents your marital harmony or conflict as well. ठीक है, the seventh house represents business partnerships. It governs joint ventures. It indicates success or failures in partnerships as well. With respect to public interaction, the seventh house represents your public dealings. It governs interaction with the society. It indicates public reputation. The seventh house also represents your sexual attraction and relationship. It governs sexual compatibility and desire as well. The body parts that seventh house governs is the reproductive organs and the lower abdomen. If you have a strong seventh house, then it will give you a happy and a stable marriage, a supportive spouse, successful partnerships. But if the same gets afflicted, it gives marriage problems, divorce, separation, and partnership failures as well. Fine. Now we have this eighth house. Now the eighth house is the house of transformation, house of sudden events, longevity. ठीक है, एंड अकल साइंसेस. जितने भी लोगों को इन अकल साइंसेस एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनका कोई ना कोई एट्थ हाउस से लिंक होगा या उनका एट्थ हाउस एक्टिवेटेड आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, इट गवर्न्स योर हिडन मैटर्स एंड लाइफ मिस्ट्रीज एज वेल. सो इट रिप्रेजेंट्स योर लाइफ स्पैन, longevity. It governs your life expectancy. It indicates sudden death or survival as well. ठीक है, sudden events and transformation आपकी लाइफ में आ सकते हैं.
The eighth house represents sudden gains and losses. It governs accidents and unexpected events. It also indicates transformation and major life changes. So किसी का भी एट्थ हाउस अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड किसी भी हाउस में जाके बैठ जाएगा तो वो उसको बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में या उस पर्टिकुलर हाउस में देखने को मिलेंगे, बिकॉज एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, एंड द ट्रांसफॉर्मेशंस आर नेवर इजी, देर ऑलवेज आफ्टर सर्टेन hard battle, certain thing will break you, then only it will make you. So this is that house. And इसके बाद it also represents occult and hidden knowledge. The eighth house represents our astrology, tantra and occult sciences. It governs hidden knowledge and secrets. It indicates your interest in mysticism as well, ठीक है. एट्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर इनहेरिटेंस. ये आपके इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है. इट गवर्न्स योर वेल्थ फ्रॉम अदर्स. इट इंडिकेट्स इंश्योरेंस एंड शेयर्ड असेट्स. The body parts that it governs is reproductive organs and hidden body systems as well. Fine. If it is a strong one, it will give you long life, good occult knowledge, strong transformation ability. And if it is weak, it will give you health risks, sudden losses, fear, and instability. So, depression, anxiety, all this can also be seen from this house as well. Now, if you go to the ninth house, you'll see it's the Bhagya ka house, ठीक है? So it's fifth from the fifth house. So that is why it's one of the, it is also the Trikona houses. 159. 159, very good trine. It's a trinal house, जो कि बहुत अच्छा house माना जाता है. Now this is the house of fortune. This is the house of higher learning. This is the house of dharma, ठीक है? So this house represents your luck, fortune, dharma, spirituality and higher wisdom, ठीक है? It governs your blessings. It governs your luck. It governs your destiny. Fine. So it represents luck and good fortune. It represents success without effort. It indicates blessings from past karma, ठीक है. So वो पूरे पुण्य था, and this is now blessings from your past karma, ठीक है. It also represents your religion and dharma. It governs your spiritual beliefs. It indicates your interest in the spirituality. Yes, it is also about the father and the guru. So then, while the fourth house represents your mother, the ninth house represents your father, and it governs teachers and mentors as well. It indicates your blessings from gurus, ठीक है. हायर एजुकेशन एंड विजडम के लिए नाइन्थ हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. द नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर हायर लर्निंग. इट गवर्न्स फिलोसफी एंड विजडम. जो बॉडी पार्ट से गवर्न करता है दैट इज हिप्स एंड थाइस. Strong ninth house gives good luck and fortune, spiritual growth and success in life. If it is weak or afflicted, it will give you bad luck, lack of guidance, and life struggles. ठीक है. Now, the 10th house. This is the house of your career, and this is also the karma bhav. So the 10th house represents your career, professions, status, and your karma. It governs professional success and reputation as well. The 10th house represents career and occupation. It governs your professional success. It indicates your career growth. And the 10th house represents social status. It governs fame and recognition. It indicates पब्लिक रेप्यूटेशन एज वेल, ठीक है. आपकी पब्लिक में कैसी इमेज है, दैट इज ऑल्सो दैट कैन ऑल्सो बी सीन बाय योर टेंथ हाउस, ठीक है. द टेंथ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी एंड लीडरशिप. सो there's one very beautiful thing. So if your ninth lord goes into the 10th house, it is considered as very auspicious yoga. Fine. And with respect to karmas and actions, the 10th house represents your actions and karma. It governs responsibilities. For physical body parts, may it governs your knees and skeletal support. If you have a strong 10th house, it will give you good career, good success, fame and recognition, leadership roles. And if it gets afflicted, it will give you career struggles, lack of recognition, professional instability. So all of these things can be there. Fine. Now, 11th house. Now, 11th house is the house of gains. Love, bhav. Okay? So, the 11th house represents gains, income, fulfillment of desires. It's all of desires, ambitions, and social networks. किसी का राहु यहाँ बैठ जाए तो इंसान की desire boom बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. It is one of the most important houses of financial prosperity because it shows the inflow of wealth, profits from career, and rewards from one's effort. This house represents the realization of your own ambitions, material achievements, and support received from the society, friends, and networks. It also indicates how successfully the native converts efforts into tangible gains. Being an उपचय house, it improves with time and gives better results after maturity. ठीक है. सो ये धीरे धीरे आपको better results देना शुरू करता है. Initially बहुत अच्छे नहीं देता.
What are financial gains and income? So 11th house represents income earned from profession, business, and career. It governs the profits, financial gains, and monetary inflow. It indicates salary, bonuses, incentives, commissions, and increments. It also represents your gains and business ventures from entrepreneurial activities. It governs profits from investments such as stocks, mutual funds, and speculation. It indicates multiple sources of income and passive income as well. It represents financial gains through government, institutions, or large organizations. It governs long term wealth accumulation and financial growth. It also indicates fulfillment of financial goals and your economic security as well. It represents gains received after hard work and sustained effort. ठीक है, तो यहाँ पे किसी का भी अगर बैड या फिर क्रूअल प्लानट बैठ जाता है, सो एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर द नेटिव टू गेन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर सोशल नेटवर्क, योर फ्रेंड्स एंड योर एसोसिएशंस. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स फ्रेंड्स, सोशल सर्कल एंड वेल विशेस. It governs social networking and group associations. It indicates support from friends, colleagues, and influential people. It also represents gains through social connections and networking. It governs social uh, associations with organizations, communities, and groups. It indicates your influence in the society and the ability to attract helpful contacts. ठीक है, it also represents social popularity and acceptance as well. Fine. It is also your elder sibling and your support system. The 11th house represents elder siblings and sisters. It governs the relationship with them. It indicates support, help, and conflicts with them. It represents gains through elder siblings. It also governs protective and guiding influence of elder siblings. ठीक है, so the 11th house represents gains from career and professions. It governs promotions, increments, and professional rewards. It indicates recognition and rewards from professional efforts. It represents success achieved through your career growth. And it governs realization of your career ambitions as well. ठीक है, अब 11th house also represents your expansion, growth, and progress in life. It governs increase in wealth, status, and influence. It indicates growth in professional and personal life, and it also represents achievement of higher social and financial status. It governs realization of material success as well. So it is one of the very, very important houses. With respect to body parts, it governs your calves, ankles, and lower legs. It represents your physical balance and forward movement. It governs circulation and muscular strength in lower limbs. It is the Upchya house, so the 11th house is an Upchya house, meaning it improves over time. It gives better results after maturity and sustained efforts. It represents gradual growth in wealth and success. It governs improvement through persistence and experience, and it also indicates prosperity with age. If you have a strong 11th house, you'll have fulfillment of desires and ambitions, powerful social network and influential friends, multiple sources of income can be there, career growth, promotions, financial stability, and social success can also be there. If it is weak one, so it will give you financial instability, irregular income, delays in fulfillment of desires, lack of social support and helpful connections, difficulty in achieving goals and ambitions, losses in investments and financial struggles, frustration due to unfulfilled expectations, and limited growth and delayed success. So, all these can be the impacts of a bad 11th house. Now, if you look at the 12th house, now the 12th house is the house of loss, it's the house of moksha, it's a house of isolation, jails, and everything. The 12th house represents isolation, expenses, foreign land, in losses, spiritual liberation. It also governs detachment and the end of material cycle. This is the last house. Fine. The 12th house represents your financial losses. It governs your expenses and spending. It indicates your wasteful expenditure. फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट आपके 12th हाउस से देखा जाता है. द 12th हाउस रिप्रेजेंट्स फॉरेन ट्रैवल. इट गवर्न सेटलमेंट अब्रॉड एंड इट इंडिकेट्स फॉरेन कनेक्शंस एज वेल. With respect to spirituality and moksha, the 12th house represents spiritual liberation. While the 8th house talks about the occult and studying all these things, 12th house is actually the house of spiritual liberation. It governs detachment from material life. So, अगर किसी का केतु यहाँ पे बैठा है, it's said that the person will definitely get liberated. It indicates enlightenment. Isolation and confinement may the 12th house represents isolation. It governs hospitals, prisons and ashrams. The body part it governs is your feet and your sleep. So अगर आपके 12th हाउस में मून या कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है, आपको स्लीप इश्यूज दे सकता है वो.
Fine. So if you have a strong 12th house, you'll get good spiritual growth, foreign success, inner peace. But if it's weak, you'll have financial loss, you have mental stress, and you also have isolation in your life. ओके, सो जो मैंने आपको हाउसेस बताया उसमें 1 4 7 and 10 आदि केंद्र हाउसेस विच इज़ दी मोस्ट पावरफुल हाउसेस, दे ले द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, इसमें अच्छे प्लैनेट्स का बैठना, इसमें प्लैनेट्स का होना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों की चार्ट में यहाँ कोई भी प्लैनेट नहीं होता, बेसिकली उनका इस दुनिया में फिर कोई होता भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ वो बना देता है। ठीक है, एंड देन द सेकंड इन द लाइन इज द त्रिकोना हाउसेस 1 5 and 9। ठीक है, 1 is your self, 5 is your past life karma, and 9 is your benefits that you reap from your past life. Fine. So it's the most auspicious. These are the dharma houses. Then comes the dushtana houses 6 8 and 12. These are the difficult houses and they give you a lot of karmic challenges. अगर आपके बहुत सारे planet यहाँ पे बैठे हुए हैं तो that you have a lot of karmic things in your life to deal with. Fine. And then comes the upchaya houses, which is 3 6 10 and 11. So these are some houses which improve with time. Okay, with age, with maturity, these houses improve. They are not per se those at good at very first instance, but they will improve. Fine. So with this, we have understood these very basics of the houses. I hope you like the video. If you like it, please like my video and do not forget to subscribe. Bye bye.